People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about their past affairs. वेल हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे स्ट्रीम पे। He who wishes to Let's peer into the go. abyss needs simply to wander through Nod Krai on a misty night. The march of the wild hunt will be sure to drag him into the darkness. हेलो लाविन्यो, यो ब्रो, पहचाना क्या? आई एम नॉट लियो एफएफ, नॉट लियो एफएफ। यस ब्रो, याद है, नाम याद है ब्रो। नाम चेंज क्यों कर दिया आपने? अच्छा तो नाम था, नॉट लियो एफएफ। वेलकम स्ट्रीम ब्रो, क्या हाल चाल? नॉट लियो एफएफ। Be silent. Close your eyes. बत्तख मार रहा हूँ मैं। हाय मैनस्टीन, वेलकम स्ट्रीम। कैसे हो मैनस्टीन? स्वागत है स्ट्रीम पे तुम्हारा ब्रदर। क्या हाल चाल मेरे भाई? ये पानी में ही डूब गया यार, पानी में से निकाल के इसको निकाल के लेके चलो। अभी मैं कहाँ जाऊंगा यार, मेरे पल्स जल्दी जल्दी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? व्हाट शुड आई डू?
इतना मेहनत करना पड़ रहा है यार, एक एक पुल्स के लिए लग रहा है एक एक दिन लग जा रहा है। एक दिन में एक पुल्स बस इकट्ठा हो पा रहा है। 5 लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, एक लाइक है यार, क्या यार भाई, थोड़ा लाइक कर दो यार गाइस, लाइक कर दो, कम ऑन डू गिव सम लाइक्स मैन। ये बात हम सब ओके। तो 12 25 60 61 की पिटी हो गई है, मतलब आज पूरे दिन भर में एक पुल्स इकट्ठा हुए हैं। 27 है, अगर 2 स्टोरी क्वेस्ट भी करूँगा तभी भी नहीं हो पाएगा यार। 75 ये है, 200 ये है, और मेरे पास क्या फार्म करना है यार, कुछ फार्म करना ही है मुझे। इसको भरने में कितना दिन लग जाएगा? 16 घंटे लग जाएंगे इसको भरने में। क्या फार्म करूँगा इस, शुड आई फार्म? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, क्या फार्म करा जाए। कोई ऐसा कैरेक्टर क्या जो थोड़ा सा वीक वगैरह हो, जिसका मैं यूज़ वगैरह करता हूँ और वो फार्म नहीं हो। ये तो फार्म है, ये भी फार्म है। और कोई कैरेक्टर है क्या? ये कैरेक्टर, ये यहाँ पे 4 कर दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, इस पे बेस्ट मत करो मटेरियल। हाँ, इसको थोड़ा सही कर सकते हैं, इसको 90 कर सकते हैं क्या? यार बड़ा मेहनत लगेगा फार्म करने से, ये 12 बार मारना पड़ेगा इसको। 70 2 और कॉन्स निकालूंगा इस पे, तो टैलेंट इसके हो जाएंगे काफ़ी। हेलो अजित भाई, वेलकम स्ट्रीम ब्रो, क्या हाल चाल मेरे भाई, स्वागत है स्ट्रीम पे ब्रदर। मंदे भाई मेरे स्कर का स्टोरी क्वेस्ट कर दो। तो भाई स्कर का स्टोरी क्वेस्ट कर दूँ? ओके कर देता हूँ ब्रो, लॉग आउट करो फिर कर देता हूँ। खाली बैठा हूँ, कर ही दे रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ चल दिए हम। इसकी मैक्स एचपी 13,000 है, इसकी 20,000 है, इसकी 15,000, इसकी 13,000 है, इसकी 16,000 है। इसी की एचपी सबसे कम है, तो इसके आर्टिफैक्ट्स जो इसके फ्लावर हैं, इतना ज़्यादा एचपी फिर भी कम हो जा रहा है इसका। ये V20 पे फिर भी कम हो जा रहा है, ये 0 पे है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला बिल्ड करूँ। टू भी सेट हो गया, नहीं यार 4 भी सेट ही रहने देते हैं।
created a बड़ी जल्दी मर जाती है यार, इसका डिफेंस भी बड़ा कम है। कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कौन सा फार्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत किस कैरेक्टर को I है। created another universe. हाँ इसको कर सकते हैं यार, इसको कर सकते हैं। 5 है ना, 7 और कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। क्राउन तो नहीं है ना। सपोर्ट फार्म कर दो। हाँ वही तो, कौन सा सपोर्ट फार्म करना है वही समझ में नहीं आ रहा ना, कौन से सपोर्ट पे मतलब इन्वेस्ट करा जाए, क्योंकि अभी ये ऑल टाइम के लिए खुला हुआ है ना डोमेन वगैरह सारे। तो इस जब खुला रहता है तब कोई कैरेक्टर ही नहीं रहता फार्म करने के लिए, और जब खुला नहीं रहता ना तो खूब कैरेक्टर रहते हैं फार्म करने के लिए। अभी तो दिमाग ही ख़राब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या फार्म करा जाए। 5 और फार्म करना है। जो टीम यूज कर रहे हो उसको तो किसको फार्म करूँ, इसको फार्म करूँ। ये 60 पे भी तो ठीक ठाक ही डैमेज दे देती है। इसका अगर लेवल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा इसका, ईएम नहीं बढ़ रहा है, ईएम जितना का है उतना ही रह जा रहा है। एचपी बढ़ जाएगा, डिफेंस बढ़ जाएगा। अच्छा ये अनलॉक न्यू टैलेंट, अच्छा इसका टैलेंट कौन सा अनलॉक होगा वो देखने दो। ये वाला इंक्रीज बाय 50% ऑफ हर एलिमेंटल मास्टरी। इसका बर्स्ट जो है वो नेक्स्ट वाले पे हो जाएगा। चलो यार फिर इसी को कर लेते हैं, अगर ये हो जाएगा तो। गाइस मैं फार्म करने जा रहा हूँ सपोर्ट। Flash attack! By royal decree! Swirl, Mark 2, Animal Test 65. When you quite finished, be silent. Fear the dark. Close your eyes. Observe to dust. Ding dong, water bomb! Stand clear. Be silent. Night falls. बस 3 ही फार्म हुआ। मुझे लगा था स्टोरी में इसके मिलेगा यार, लेकिन मिला ही नहीं साला इसके स्टोरी में वो। ये एक एनेक्डोट आ गया क्या, इसको कर लेता हूँ फिर। एक एनेक्डोट आया है, कर लेता हूँ।
इन्हें चार्जिंग मोड पे है और यहीं पे इससे बात करना है। Almost there. That should do it. Once Neville wakes up, I'm treating myself to 3 whole slices of cake. Oh, hey! Are you here to play? Sorry, but I'm busy right now. And F is fine, by the way. Just undergoing some routine. But a few days ago, Yehoda called her an unfunny, dumb metal-faced lunkhead. Right before starting her maintenance, she asked me if I could upgrade her sense of humor. Yeah, glad we're on the same. Okay, I'm going to activate her. And now अबे जल्दी जल्दी खत्म हो जाओ यार। Good morning, Aino. अरे यार इनेफा होती मेरे पास तो भाई यार फ्लिंस का डैमेज देखने में मजा आ जाता भाई, कसम से भाई बहुत मजा आता। Duh. Such a trivial task is nothing to a genius like me. Enough. I cannot. The more sugar I put into a crumb cake, the more prone Aino will be to toothaches. The more toothaches she has, the less sugar she can consume. The less sugar she can consume, the less sugar I can add to the crumb cakes. Therefore, the more sugar I put into a crumb cake, the less sugar the crumb cake will have. Okay, that's not supposed to happen. Help me with another test, will ya? If it stays bad for a while, the traveler will crack a smile. And what now? भाई जोक मार रही है, लग रहा है डरा रही है। What? You are not laughing, so I suspect I was not understood. Actually, the Actually, the first joke I told used a deliberately flawed chain of logic. After confusing the relative relationships between crumb cakes, sugar, Aino, and Aino's dental health, I drew a ridiculous conclusion. For the second joke, Okay, well, the jokes are funny, but the punchlines don't work if they aren't explained. yes. However, according to my data, such chaotic sentence. Oh. Huh. Interesting. Enough. Traveler, why are you covering your face? You got a toothache? Have you got on a Huh? What's wrong? Don't tell me you're getting sick or something. Enough. Go make him something warm. Understood. Maybe he ate too many hara fruit, a type of plant from Sumeru. Huh? What do those have to do with any of this? Because eating them can make you feel horrifyingly cold. भाई ट्राई हार्ड कर रही है जोक मारने का इनेफा। मायो भाई वेलकम स्ट्रीम ब्रो। इज नेफर गुड विदाउट लोमा? नो ब्रो, शी इज गोना लूज हर 30% ऑफ डैमेज। You should pull nefer if you have loma, otherwise I don't recommend it, or it's your call bro. If you like her, go for it. If you need more damage, then you should pull loma. देखो यार जाहिर सी बात है कि मैं फ्लिंस निकाला हूँ और मेरे पास इनेफा नहीं है, तो मेरा फ्लिंस बहुत ही घटिया डैमेज देता है, ठीक है। तो वही हाल आपका भी होगा। आप बिना लूमा के खेलोगे तो नेफर उतना अच्छा डैमेज नहीं देगी, डील नहीं करेगी, तो आपको मज़ा नहीं आएगा खेल के, जाहिर सी बात है। ओके कंप्लीट है, लेट्स गो भाई, मज़ा आ गया। एनेक्डोट्स कंप्लीट करो, लेते जाओ प्राइमोजेम्स। 70 भाई यार कितना टाइम लग रहा है यार। अभी मुझे कहाँ जाना है, इसको मारने जाना है फिर से, लेकिन हेल्थ तो करा ही नहीं मैंने। C0R1 नेफर विदाउट लोमा टीम नाहिदा निलाओ एंड आई नो दिस F2B टीम। इट कुड वर्क, बट आइनो की जगह अगर लोमा रहती ना भाई तो और बेटर परफॉर्म कर सकते थे आप, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। हाँ ये टीम जा सकती है, C0R1 गुड रहेगी।
मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है ब्रो, द थिंग इज़ कि मैं भी एक नया प्लेयर ही हूँ इस फील्ड में, आपको पता ही है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो, नए हो तो नहीं पता होगा। मैं 5 महीने से ये गेम खेल रहा हूँ मुश्किल से, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। बाकी चैट अगर कोई किसी को पता हो तो भाई आप रिकमेंड कर सकते हो। नाइदा R1 ऑल्सो अबाउट 20 के डैमेज लूज विदाउट लोमा। यस हाँ 20-30 के। अबे यार मैंने हील तो करा ही नहीं, फाइट करने आ गया। इतना सारा गणित है ना यार, मैच लगाओ इतना सारा तब जाके गेम खेलो। मुझे तो समझ में नहीं आता, कभी गेम खेलने आए हम लोग, एग्ज़ाम क्रैक करने आए हम लोग। इतना सारा दिमाग लगाओ तब जाके तो ये गेम चलता है। इतना मच्छर काट रहा है क्यों? साला है क्या ये चीज़ जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? With Loma, if she hits 150 without her, will be about 130k to 120k for C0R1। तो भाई 120k आपको अच्छा रहेगा आपके लिए, आप खुद देख लो। 120k is good or I'm having not? 5 whole crumb cakes for dinner tonight, and nothing's gonna stop me. Not even the nefer's super angry mode. Go claw! Absorption test. Close your eyes. Night falls. Be silent. अरे यार मैंने अटैक मिस कर दिया, You on this. जिससे मैं अटैक किया ये था ही नहीं। Enhanced animal हवा में weapon 75. हर बार अटैक के टाइम पे ये हवा में उड़ जा रहा है। Observe. Close your eyes. Do you fear the dark? अबे ऊपर उड़ जा रहा भाई, बड़ा बदमाश आदमी है भाई। Flash attack. Run. Oh, reveal thyself. Animal test 6308. Absorption test. रुक जाना भाई, एक जगह रुक जा। Animal hyperstasis simulation. Doesn't hurt. Look, the rainbow. By royal decree, Midnight Phantasmagoria, I summon thee. No rest for the wicked. Beware the creatures of the night. Be silent. चेक आउट माय मुलानी। यस ब्रो भाई बिल्कुल। भाई तेरी वॉचिंग क्यों नहीं आती है ब्रो? मेरी वॉचिंग इसलिए नहीं आती है क्योंकि मैं यार मैं 5 महीने से गेंशिन खेल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर है वो मेरे पुराने गेम्स के हैं। जैसे मैं शुरू में BGMI खेलता था, PUBG वगैरह खेलता था और फ्री फायर वगैरह खेलता था, उन सब के सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे लगता है गेंशिन से मुझे 700 सब्सक्राइबर मिले होंगे या 500, 400-500 सब्सक्राइबर मुझे मिले होंगे गेंशिन से, या उससे कम ही मिले होंगे। उसमें से बाकी लोग छोड़ दिए क्योंकि मैंने जब खेलना छोड़ दिया तो अभी बहुत कम लोग आते हैं। किसका आईडी देखना है यार बता दो, देख लेता हूँ। प्रियांश ग्रे वेलकम स्ट्रीमर भाई। फिशल की जगह ओरोरॉन ट्राई किया ब्रो? ब्रो मेरे पास ओरोरॉन है नहीं यार, तो मैं कैसे ट्राई करूँ मेरे भाई। 180611 मैं 5 महीने से ही खेल रहा हूँ, मैंने ओरोरॉन पुल ही नहीं करा है। 5 महीना होने वाला है मेरा। 94 तो भाई क्या देखना था आपका? मुलानी भाई के मुलानी देखनी है गाइस। 90 कर रखा भाई ने लेवल, और मैक्स स्पीड 35,000, अटैक 1000, EM 140, क्रिट रेट 69%, नाइस। क्रिट डैमेज 271, वेरी नाइस। जहर सिग्नेचर वेपन है क्या? अरे नेफर का सिग्नेचर वेपन दे रखा है इसको, वाह भाई सही है यार।
गाइस ये नेफर का ही है ना, आई गेस नेफर का ही है। आर्टिफैक्ट्स दे रखा है भाई ने, कौन सा आर्टिफैक्ट्स है, ऑब्सीडियन है ना। क्रिट रेट दे रखा है एचपी पे 5.8%, क्रिट डैमेज 18.7%, फेदर पे मिल जाएगा क्रिट रेट 11, क्रिट डैमेज 13%, नाइस। सैंड एचपी परसेंट का दे रखा है, क्रिट रेट 5.8, क्रिट डैमेज 18%। गॉबलेट एचपी परसेंट, क्रिट रेट 10, क्रिट डैमेज 25, नाइस सीबी मेरे भाई। चॉकलेट दे रखा है क्रिट डैमेज का, क्रिट रेट 6.2, इस पर भी मिल जाएगा। मुन्नी बदनाम हुई। अरे भाई तुम्हारा चैट नहीं बढ़ रहा था यार, मैं मुन्नी बदनाम कर दिए तुम। मैं अपनी शक्ल लगाओ भाई, अपनी शक्ल लगाओ भाई, मैं दिखता ही बड़ा अजीब हूँ यार, मैं आई एम नॉट गुड लुकिंग, सो दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर वेब कैम। अब आएगी वॉचिंग भाई मेरी शक्ल देख के तो और वॉचिंग चली जाएगी ब्रो। मेरा घर भी टूटा फूटा है यार, अच्छा घर नहीं है, इसीलिए बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, मेरे पास वेब कैम भी नहीं है, तो यार उतना खर्चा कौन करने जाए यार। इनेफा है, इनेफा नहीं है मेरे भाई। और अराउंड C6 इज़ बेटर in this theme, but at C0 official is better. C0 official is better. तो C0 नहीं है मेरे पास, C4 है official है यार, तो फिर गलत हो गया, उसको C0 कैसे करूँ। मेरी आईडी पे कब जाओगे, वही वेट कर रहा। अरे तो मैं बोला तो हूँ, आप लॉग आउट करके बोलो, आप लॉग आउट करके बोले ही नहीं हो, तो भाई मैं क्या करूँ। वेरी वेरी नाइस मुलानी, यस भाई अच्छी है मुलानी, 7/10 मुलानी अच्छी है। 109 ओवर 271 भाई, बढ़िया है भाई, माय भाई बहुत प्यारी है। ओके देन 8/10 8.9 भाई रेटिंग बहुत प्यारा दे रहे हो यार अर्जुन भाई, मैं खेल नहीं रहा। ओके तो फिर लॉग आउट कर लेते हैं, रुको चलो इसको ओपन कर लूँ। अरे छोड़ो यार, खाड़ में जाए, बाद में कर लिया जाए। एक सेकेंड आप लोग। अरे अर्जुन भाई कोड दे दो चैट में, कोड दे दो, कोड क्या होगा, लॉगिन कोड।
हो गया लॉगिन, थैंक यू। चलो बताओ अब क्या करना है। स्टोरी क्वेस्ट करना है ना, ठीक है मैं स्टोरी क्वेस्ट कर लेता हूँ। स्टोरी क्वेस्ट करके लॉग आउट कर दूंगा, तुम उसके बाद खेल लेना, ठीक है। स्कर्क क्वेस्ट, स्कर्क का स्टोरी क्वेस्ट करना है ना। स्कर्क का स्टोरी क्वेस्ट करना है। स्कर्क कहाँ की रहने वाली है? लिवे की रहने वाली है क्या स्कर्क? भाई लोग और किसी का यूआईडी वगैरह रिव्यू करना हो तो इस क्वेस्ट के बाद हो पाएगा, ठीक है। अबे यार कोई ऐसा कैरेक्टर दे देते जो कम से कम ट्रैवल करने में फास्ट हो। कौन भागता है खूब तेज? ट्रैवल कौन करता है फास्ट? कौन कैरेक्टर लेकर भागता है खूब तेज यार? वेरेशा, वेरेशा, ठीक है वेरेशा ले लेता हूँ। अरे यार कोई फाइट करने आ गया इसे। छोड़ो स्टोरी शुरू हो गया। Wait, this is near the chasm, right? Yes. If we enter from here, we'll be able to reach that place from your dream. You have some experience with abyssal domains by now, but still, this is someone else's territory. Best to proceed with caution. Don't worry, Paimon's an expert at hiding behind other people for safety. Oh, but, that means you need to stay safe, traveler. All right. Remember your training. Time to put it to use.
boat behind you. Come on, you got this. Hey, what are you two doing here? Dusty, like an abandoned house. Let's press on. Mine to wield. Oh, looks like this is a dead end. Did we make it to his hiding place? Ugh, this fog is making it impossible to see anything! This should be the place where you were attacked, Traveler. The missing part of your soul should be nearby. Can you sense where it is? Our opponent must have covered his... स्कर किसका अकाउंट है? अच्छा, ट्राई नहीं कर रहा हूँ ब्रो, ये Stay calm. किसका अकाउंट है? चैट में देखो कौन है. Give our enemy some wiggle room. Our enemy to... From the start, the attacks have been focused on me. Trying to break through my defenses? I see. You all right? That thing was... There. I got it back. Traveler! Skirk! What happened? It looked like Skirk just got... In the Guili Plains, you asked me why this enemy chose you as his target. Now, the answer is clear. It's not just the fact that your strength is impressive. It's also because of your ability to, as you put it, purify abyssal power. Whatever that actually means. The fact is, that ability allowed him to do something that should have been completely impossible. Namely, break through my defenses and steal my power.
No. He couldn't have known I'd come to his domain. Call it fate. In any case, it works to our advantage. Once I realized what he was using that power for, it gave a cup. Well, done gorging. How did you get the all-devouring narwhal? Oh. I highly doubt you acquired that power. You're desperate enough, which leaves one. Foul! Who dares call him foul? What's wrong? Bit off more power than you. Just Look, it's bad. Those obsessed with power will let it devour them before abandoning. Keep calm and. Wise decision. Final victory doesn't always come after a single battle. You've got your soul fragment back, so we both got what we came for. Let the enemy get us out of here, traveler. You'll need to lead the... Skirk, is your shoulder gonna be okay? The wound is minor. It'll heal in no time. You should focus on getting out of here alive instead. Uh-oh! Falling spikes! Run! Watch out! Looks like this place is about to collapse! So, this guy's power has something to do with the all-devouring narwhal. Did you know that all along, Skirk? I had my suspicions. That's why I decided to investigate it. Phew. Oh, we should be safe here, right? I no longer sense his presence. Can't have followed us out of that abyssal domain. Weaklings like him will find that my power is not so easily controlled. He won't be leaving that place until he's managed to digest it. You seem surprised. I suppose that's fair. You've seen but a fraction of what that whale is capable of. It's called the all-devouring narwhal for a reason. Devour. Yeah. Your dragon friend wrecked a different story, but I hadn't counted on there being anyone left on this planet capable of wielding its power. Exactly. And I believe that brings our... No way! We can... This isn't my first... But what if that monster... Plus, how are you gonna get home? So, sticking with us for the time being doesn't sound so bad. Fair enough. Then take this. A bag of Mora. Nothing in this world is free. I'll leave the planning to you. We should take Skirk somewhere she can rest. But where? Paimon gets the feeling Skirk wouldn't like being around a lot of people. Oh wait! Baishu said we could rest in the back room of the pharmacy, didn't he? Let's head there!
inside. Huh. This bag from Skirk has a ton of Mora in it. Does she have a job or something? Wait, no. After what we saw at Wamin Restaurant, that seems impossible. Can you imagine? It would go something like... I'll be collecting my paycheck now, boss. Oh, sure thing. Wait, who are you? Have we met? Can't hold a job if you make everyone forget about you. So, what did you do to get all this Mora? Claimed some buried treasure, took care of a few monsters that were causing trouble. Nothing untoward. It's safe to use. Ah! You heard all that? A sonorous voice like yours is hard to miss. I wouldn't be surprised if the sound of it traveled to the nearest mountaintop. Then, did you by chance happen to hear Paimon's little, joke earlier? You mean when you called me Frosty the Lavender Melon? Sorry. Paimon totally misspoke. Okay, fine. Ugh. I noticed there was only one bed. Wait, I don't get tired, and I don't need rest. I'm going to practice my sword work. That should help me regain some strength. but your shoulder... Hey, don't just leave! Ah, whatever. Let her tire herself out. She'll come back eventually. Let's get some sleep, Traveler. That comfy bed is calling, Paimon. Quiet. Do you even remember how many of us perished in that fire? How many bodies were left to rot on the scorched earth? Yet Keep your gate. Run. Getting an early night's sleep is the best. That bed was so comfy. Wait, Skirk? Have you been sitting out here? About 60%. Whoa! No, not fast enough. That's 20% less than last time. Same train. No, I need to meditate. Ooh. Thanks.
Skirk is still meditating, huh? It's been 2 days already. Shouldn't she be awake by now? Paimon can't think of anything we can do to help. Be right back. That's right. This isn't your first time here. But what you I only managed... Call it... fate, if you want. I think that's the word they use in this world for lucky coincidences like this, right? Now, before I take you to her, I gotta ask. You're the first... Oh, you know, this river strength accumulates, but... when all she's... You must learn to shut out all the pointless emotion. Crush the self that makes you weak. And become master over your This isn't my first. The answer to one... हेलो विकास भाई, वेलकम स्ट्रीम ब्रो। क्या हाल चाल मेरे भाई, स्वागत है स्ट्रीम पे। ब्रो मैं स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ इसका भाई का, अर्जुन भाई का। अर्जुन भाई बड़ा ये टाइम ले रहा है यार स्टोरी क्वेस्ट, ये बहुत बड़ा है यार, दिमाग खराब हो रहा है ये करते। एक तो जल्दी ये हो भी नहीं रहा है। लोग एविस थिएटर करवाते हैं लेकिन यहाँ कुछ और चल रहा। अरे यार मेरे से एविस थिएटर होता ही नहीं है। Seems like you've answered your own question. Skirk sees herself as a trespasser in this world. She's made a conscious choice to avoid altering its path. But the reason for that decision stems from events much earlier on in her life. Let's keep going. It's still a long way to the source of the river. लग रहा मोटा रकम दिया है। हाँ भाई मोटा रकम दिया है भाई ने।
भाई ने 10 मेंबरशिप दिया है लगभग, गिफ्ट करा है भाई ने सभी को। You now have what it takes to wield. No one can become a worthy warrior through it. You wish me to travel the world beyond. Indeed. We will still have contact through the abyss. But know this. Why do you do that? I have told you before. Fear is the catalyst for human evolution. You have tasted loss. You have known fear. So deep, it can be felt in the bones. But as living beings, we all have an instinct to detach from that which harms us. And thus, pain dampens over time. And the acrid taste of fear becomes but a distant memory. Yet now, I have bestowed upon you the gift of fear eternal. It will drown you in the nightmare of your childhood. That is what Skirk's master. Of course, he could appear as a beast, a human, or even a monster that defies description. The form you see him in here, clad in abyssal armor, is the one he usually wears when traveling through the stars. For certain reasons, I need to bridge to do that. हेलो अकीरा, वेलकम स्ट्रीम। क्या हाल है हीरो, डिनर हो गया? I'll let you in the scope of it. We've made it quite a ways already. This is Skirk, when she first began training under Sir Lodi. I have set your broken. No tears. Can I ask a question? Keep thinking. I saved you. It has been too so. But What you want matters among the bounty. yes, master. From that day forth, after some, it was not. I almost don't want to reach the end.
as simple as this. It was a spaceship. Skark's parents. No one had it. Skark had skipped school that day. These countless people, their lives were... गेम खेल के आया कुछ देर में. ओके ओके बाय. The fire would have claimed her life. Because she and her people were seen as a threat. As the initial further research revealed that, over time, the people of this planet had evolved the ability to adapt to any type of environment or energy source. For that reason, the outsiders viewed them as a potential threat and decided to eliminate them before the threat could rear its head. And so, the army was called, senseless, isn't it? Deemed a threat because of a gift they didn't even know. If those with power get to just... No one wants to relive their most painful moments. Well, that brings us to the end of the story. Skirka's waiting over there. Let's go to her. It's time. So all this, just so you could bring him here. I have things to say to you. Well, to me. I want someone to witness our reconciliation, even if it takes an argument. Her suppressed emotional self. The version of herself she keeps locked in the recesses of her mind, stifled by reason. All those rejected impulses, those discarded aspects of your past selves, they are I am who you used to be. Someone you have refused to face for too long. So, I came to face you instead. You're wrong. I've faced you all along. And that's exactly why I keep you locked here. Your existence makes me weak. Moments of joy and longing are when we are most vulnerable. Don't forget. Even so, strip yourself. The difference is that I'm doing what is right, what is necessary. I allow you to exist, but with limited freedom.
That is the greatest kindness I can offer. I've shouldered everything you couldn't carry. I rose above the numbness and emptiness, and it was cold, unfeeling reason that brought me this far. That is the problem on the grand scale of... Think back to those nights of gazing at the stars. Those afternoons of exploring the unknown. Think back. That isn't what we need. It's exactly what we need. Aren't you curious about why recovering your strength has taken longer than normal this time? Finally, you get to the important part. That is the only answer I came here to find. Then look around. Look at your inner world. You cast aside your dreams and curiosity, and in doing so, you lost your original motivation. You severed all connection to who you used to be, so you can no longer draw strength from your past. Now, the only things... And do you think that means I should seek... Your emotional self isn't the fact that she transcended time and broke free. Thank you for saying... To be honest, I'm not... But what is right at one point in time isn't always right forever. And I know that among the voices that haunt you, all those unfulfilled hopes are like knives to the heart. And I don't want you to hurt anymore. So even if you can't accept me, I hope, at least, that you can let go. I keep thinking, maybe it would be better if I had died. I wouldn't be haunted by that fire all the time. I wouldn't have to go on like this. Your dad and I, we're not afraid to stare death in the face, but we need you to survive. I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there, and I'm ready to see them all. I remember. There was a song Mom and Dad always sang when we went out to fetch water. Dancing water. The sand along your path is begging for your song and movement. Will you carry this burden with you on your journey? I am not the dancing water, and you are not the burdensome sand. But if this is your wish, then I will carry you with me until the end. Thank you. I should be thanking you. Run, Skirk, run! Remember, leave no one alive! Heed my words, Skirk. Let fear take root in your soul. Did you survive? Why was it only you? Skirk, did you become a positive light in this world? Hey, this doesn't have to be the end. Life is a gift. Don't let darkness claim it.
So, you saw my memories then. I once asked my master if survival of the strongest was the law of the universe. He said no. But in a world without order, those with no moral boundaries tend to be the ones who survive. That's why, after hearing his answer, an idea came to mind. An idea that, one day, I would create a new world order. One in which there would never be another Skark story quest. Do you speak human languages? Mic check. Yeah, I do. But I actually focused on this story. So I won't be able to talk for a while. So I'm sorry for that. Of all rules and order. Yes. And not just because of the gap in our abilities, but also because I have no reason to see him as an enemy. Although his decision to train me was not made out of kindness, he did everything a master should. He saved my life, taught me the sword and the principles of strength. And I know, and it's not something I want. But Master never goes back on his word. I have to treat everything he says as a promise. He's no longer into that, but he sends me messages through the abyss every now and then. Most of them are simple greetings, or an answer to one of my questions. Every time I hear from him, my heart skips a beat. And I wonder if this is the moment where he'll finally appear before me and tear down everything I've built to pieces. Maybe that means I do live in eternal fear, just like he said. Yes, I respect him, but I'm also afraid of him. And for that reason, the pursuit of strength consumes every moment of my life. I don't know what Master has planned, but I have to be ready. Help me? Why? This isn't your fight. Because if we want to build the world we both want to see, everyone has to be willing to fight for it. If we all do our part, we can make the entire universe a kinder place.
Honestly, Paimon was gone for like 2 seconds and then she comes back and finds you both unconscious? Oh, you scared Paimon half to death. You're both okay, right? What does it look like?